हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, ये वीडियो मैं मोवा जाके क्यों शूट कर रहा था, क्योंकि आदिवासी के दिन मतलब लेट वो इवेंट स्टार्ट होने वाला था। आई थिंक 9:30 या 10 बजे, लेकिन आपका भाई बहुत लेट उठा था मैं। सो मैं घर से निकला था आई थिंक 10:30 या 10:30 या 11 बजे। मैं जल्दी मैं घर पे शूट ही नहीं कर पाया था। तो ऐसा था, हमारे सारे ब्लॉग्स घर से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये ब्लॉग मुझे मोवा जाके शूट करना पड़ा। तो आगे की स्टोरी आप देखिए। So, hello, good morning everyone. This is Mukesh and welcome to my YouTube channel MG Zone. So guys, आज है आदिवासी दिन और मेरे सारे फ्रेंड्स को आदिवासी दिन की शुभकामनाएं है। और सीन्स कुछ ऐसे है। मेरे साथ कार्तिक है और हम लोग जा रहे हैं अभी भगवानपुरा। फिर से सॉरी क्योंकि मैंने इसमें अभी माइक नहीं लगाया, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए मैंने अभी माइक नहीं लगाया है। मतलब अभी हम जा रहे हैं भगवानपुरा, वहाँ पर आदिवासी मतलब इसका इवेंट है। तो ठीक है, फिर चलते हैं अभी भगवानपुरा। Check your body. Let's not sleep together. You can't sleep neither. Let's not sleep together. You can't sleep neither. Let's not sleep together. Check your body. Check your body. Check your body. हाँ तो गाइस, फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं अभी इस भगवानपुरा में इवेंट में। तो फिर अंदर देख के चलते हैं कि कैसा इवेंट है। सो ये लेट्स गो। Underground. Check your body. Let's not sleep together. You can't sleep now. सो गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इवेंट से ज़्यादा मुझे वो बाइक की रैली में बहुत मज़ा आया। मतलब एक नंबर, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन बाइक की, और आगे वो डीजे चल रहा है। मतलब इतनी सारी लंबी लाइन, बहुत रैली में बहुत मज़ा आया।
इवेंट से ज़्यादा मुझे रैली में मज़ा आया। सो गाइज ये वीडियो बस इतना, मतलब ये वीडियो इतना शॉर्ट ही है क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी तो क्या शूट करूँ, और वैसे मैंने रेनकोट पहन लिया था तो फिर ठीक है, आगे देखिए। और अभी हम घर जाने वाला है। मतलब रैली में इतना मज़ा है ना, क्या बात कहूँ आपको, बहुत मज़ा है रैली में। अभी बारिश मतलब होने वाली है अभी, तो vlog-8 करते हैं। बाय।